स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। आइंस्टाइन सजेस्टेड दैट लाइट हैव पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। आइंस्टाइन ने सबसे पहले क्या बोला कि हमारे पास लाइट का वेव करैक्टर भी है और लाइट करैक्टर भी है, पार्टिकल करैक्टर भी है। इसी तरह से 1924 में डी ब्रोगली ने 1924 में डी ब्रोगली ने ये बताया कि जिस तरह से लाइट का ड्यूअल करैक्टर है, इसी तरह से हमारे पास मटेरियल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जितने के जितने हमारे पास मटेरियल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी का भी क्या होता है, ड्यूअल करैक्टर। इनका भी पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर भी है। उसी रिलेशन को हम बोलते हैं डी ब्रोगली रिलेशन। इस डी ब्रोगली रिलेशन ने क्या बताया कि ऑल द मटेरियल पार्टिकल इन मोशन पोजेस वेव करैक्टर। क्या बताया कि ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन, कि जब मटेरियल पार्टिकल मोशन में होंगे, इन मोशन पोजेस वेव करैक्टर। कि इनके अंदर क्या होगा कि जितने के जितने मटेरियल पार्टिकल है वो मोशन में होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, दे हैव वेव करैक्टर। अब उसके लिए डी ब्रोगली ने रिलेशन दिया कि उनकी वेवलेंथ जो है दैट इज इक्वल टू h upon mv, where h is the Planck's constant and m is the mass of the material particle, and v is the velocity of material particle, and lambda is called wavelength of the material particle। कि उसने रिलेशन दिया that is lambda equal to h upon mv। how we can derive this relation? This relation can be derived by mass and energy relationship। How we can, that is lambda equal to h upon mv, that can be derived by mass and energy relationship from the two relation of Max Planck and Einstein। Means de Broglie relation can be explained by mass and energy relationship of Max Planck and Einstein। According to the Max Planck, the energy associated with material particle is directly proportional to its frequency। According to the Planck's, the energy associated with the material particle is directly proportional to its frequency। और E इस यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए उसने एक कांस्टेंट दिया, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट H, E इक्वल टू h म्यू। दिस इज द रिलेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू द Einstein, the energy and mass can be related with each other by a relation E equal to mc square। This is energy mass relationship given by the Einstein। This is equation number 2। Combine equation 1, equation 1 and 2
Our equation 1 is h nu and equation 2 is mc square. Now the frequency of the material particle is related with the wavelength by the relation V equal to C lambda, or lambda equal to V equal to C upon lambda. V equal to C upon lambda. Now put, this is equation number 3, put equation V in equation number, this is third, put V in equation number 3, we can get h c upon lambda equal to mc square. कि जब हमने V की मतलब वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, V इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, इसको हमने किस में पुट किया, एच म्यू में, तो हमारे पास रिलेशन क्या आया, एच सी अपॉन, यहाँ पे सी और सी की वैल्यू कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बचा एच सी इक्वल टू एम सी ओ आर आर लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी. दिस रिलेशन इज यूज्ड फॉर द पार्टिकल लाइक फोटोन. Means for the light particle lambda equal to h upon mc relationship is used. Now replace where c is called velocity of light. Velocity of light, c is called velocity of light. Now replace velocity of light c by velocity of material particle that is V. Now lambda equal to h upon mv, and this is called lambda equal to h upon mv called as de Broglie relation. Lambda equal to h upon mv is called de Broglie relation. Now instead of that, lambda equal to h upon p, because product of mass into velocity is momentum. Product of mass and velocity is called momentum. Therefore lambda equal to h upon p, where p is called momentum. P is called momentum of the particle. We see here, if we cannot write here the h Planck's constant, then lambda is inversely proportional to 1 upon p. It means the wavelength of all material particles is inversely proportional to its momentum. From this relation what we can get, the material of wavelength of all the material particles is equal to their momentum. Now the relation of wavelength and momentum was first experimentally verified by Davison and Garmer, G-A-R-M-E-R. Davison and Garmer was the two different scientists who first very experimentally verify the relationship by diffraction effect. By diffraction effect. Davison and Garmer was the scientist who experimentally verify the de Broglie relationship by diffraction effect, and based upon the diffraction effect nowadays we can use electron microscope. Electron microscope can be based upon the principle of de Broglie relationship, that is diffraction effect, and their practical use is nowadays electron microscope. Now what are the significances of de Broglie relationship? Since de Broglie relationship is highly significant for the material and submicroscopic particles like electron, photon, neutrons,
protons, but when we apply for macroscopic particles which can be visible, this relationship cannot be valid because the wavelength of the macroscopic particle is fall outside the electromagnetic region. That is why the de Broglie relationship have no significance in macroscopic particles, but they have significance mostly in the microscopic because the wavelength lie in the electromagnetic region which can be identified by the spectroscopic techniques. Thank you.